from you, what are these lasting feelings you have about other budget to this budget? Just describe their journey first. Each budget is a challenge for its contents, but equally it's a challenge to craft the language of the budget. Even though I do it in English, and I don't know if Hindi budget has been ever presented, but we do it in English. It has been a desire of the Prime Minister that budget should be simple. You convey it simple. And the language should be simple so that anyone should be able to understand what you're saying. And the other big feature that he has been clear from the beginning is budget should say everything that it has to say. You can't say some and you hide something else, not just in the language, but also in the way Ministry of Finance and its affairs run, so that you're not borrowing from outside of the budget, you're not showing it in the budget statement, you're not really showing all your expenditure to keep your balance sheet looking pink. Don't do anything which is, the usual pushing under the carpet, things like that. So that has been continuously improved upon each time. That message which has been received, we try to fine-tune it each time so that ultimately it should be a simple document form. Because in my childhood, I remember budget document was so complex, people would study, people would analyze. And in the south, you had Nani Palkiwala coming and giving us. In fact, that used to be called as the budget for the people. True. Because the budget which was read in Parliament was one thing which no one could understand. Then Palkiwala would, actually he used to do it in Mumbai. Then the crowd became so much that he shifted to a stadium. And in Mumbai, it used to happen in that kind of explaining the budget to the people. And he used to come south. So from those days, I think today the budget speaks for itself. But you are becoming too challenging for us to handle. Ma'am, I have completed covering more than 30 budgets so far. We used to say, and we still said this, that fine print ka wait karte hain. There will be some fine print. Now there is no fine print, no mystery, no googlies. That's right. So that was the objective. That was the desire of the Prime Minister. That everything you state up front. And if you do have to later on do some kind of a minor adjustments or amendments, that should be after taking the feedback. That is the other one major thing that we did about budget. This time, because it's in July, it's not happened. Otherwise, a February budget would have a first half of a session and then a recess and then a second session. Right. During the recess, I would take the budget and go around the country talking with professionals, chartered accountants, businesses, commerce, trade, everybody, industry. And for the presented budget, they would give some ideas saying, no, not like this. This might have a problem. Can you change this like that? So we used to come back. And when the finance bill has to be dealt with and passed, treasury amendments used to be brought in and people used to say, you presented the budget only 15 days, 20 days ago. You want to come up with amendments. That is one other thing which the Prime Minister desired. Saying budget parliament में पेश कर रही हो ठीक है, then parliament में opposition सुनते हैं ठीक है, मगर फिर भी इसमें और कुछ sharp focus करना, correction करना, तो हमें कैसे मालूम होगा? जाओ पूरे देश में सबसे मांगो कि उनकी राय क्या है. So I brought in that practice of go around, come back, and if there are some worthy corrections to be done, we used to go. And there are times when opposition asked me, how can you come with an amendment? You only brought it in. And I openly said it. It is on the record of the House that I've taken the input from the people after tabling it. And I'm willing to go with the correction if necessary. So there are a lot of practical things that we've done. Right. इस बजट का जो एक सबसे बड़ा फ्लेवर है, हालांकि ये पूरे देश का बजट है और सभी के लिए कुछ ना कुछ इसमें है, लेकिन जो एक सबसे बड़ा फ्लेवर है मुझे लगता है वो है यूथ.
So let's deal with two subjects first about concerning youth. Now you have said that you are nudging the industry. It is not mandatory. Then the implementation becomes a bit of a challenge. While we know that this is the biggest challenge as Indians we have to fight with, which is unemployment. So I wanted to capture your thoughts. How will this be executed? How will we measure the outcomes? See, when we are talking about youth, this budget gives a package or a basket of things for youth. One of them is the apprenticeship, where we are depending on the top 500 companies. Another is skilling, which is looking at all the state-based, state-managed, state-owned ITIs, where nearly for 30, 40 years now, not much of an investment from the state side. I'm speaking about all states. Not much investments have happened to upgrade their equipments, training modules, or content of the course, or even bring well-trained teachers, trainers, and so on. So there we are also working with the state governments, hopefully, and with the private participants, so that the ITIs will be equipped. We'll provide them the resources to have such equipments which can be used in training our youth for industry readiness, but for industry 4.0. So you're not just again training them to deal with the lathe machines, you're also doing other things, and such things with which in a industry 4.0 digitized world of robotics, world of web 3, and world of AI, in that how will these youth get in? So one was the top 500 companies apprenticeship. Second is a state level ITI based with business partnership, giving them skills so that they can join in industry 4.0 ready companies. Now these are not engineers, these are students who come out of higher secondary schools. So for them we need to ready the ITIs. So these two are apprenticeship and training. But three others are completely provision of jobs, providing jobs. And how are we going to monitor that? It is because we are saying unless the newly recruited person is put into the EPFO record, Employees Provident Fund Organization record, he is not on board at all. So the monitoring of it is going to be by the payments he makes, the employer, and by the recruitment he does. So we are very clear, and we had done a complete consultation with the industry before launching this, and they have very clearly agreed that it is implementable. Okay. The other thing concerning youth, I'm jumping a subject, but just to finish this part, is about STT on derivatives. Derivatives are fundamentally for hedging, but young Indians are taking very, very deep interest and they are risking their savings. So this is again a nudge, a very gentle nudge. More needs to be done. We strongly believe it is for the SEBI, the regulator, to do that regulation in the market, just as they've been voicing concern as well. Voicing concern about the speculative activity going on in the futures and options market, and also about the valuation levels. There are lots of commentary after that as well. So you're right in saying it, but our intent was just to make one indication. It wasn't so much for revenue, it is more for being sure that people realize that they're getting into high risk areas. But we leave it to this SEBI to give a soft touch regulatory approach to the markets, be it for the F&O or the cash market. Right. Bringing the conversation under a spotlight so people get educated about it. I believe that investor education is still a WIP and a lot needs to be done by all the participants and stakeholders. Absolutely, yes, I agree. This budget actually challenges us on the other front. Very difficult to find some real criticism.
So 2 or 3 criticisms have come. Let's discuss that, and then I get into some other issues that has not been discussed much. One is, which now it seems is a tactical mistake, because I have read the budget. Budget talks about the country, that covers all the state, but focus has gone on 2 states, basically Andhra and Bihar. Do you think, to keep the speech short, government decided to focus on these 2 states while other states are also benefiting a lot? States are getting, as they were getting earlier, some will get more, some will get less. By not invoking the name in the speech, no state is being denied anything. But although for 10 years we have been actively engaging with Andhra Pradesh getting rebuilt, the state doesn't have a capital even today. Whatever be it, I'm not getting into the politics of why building the capital has got delayed. But it is by the provisions of the Act which enabled the division between Telangana and Andhra Pradesh, the Act requires the center to support it in building its capital and also in supporting its backward regions. In the last 10 years, several activities have happened in taking all the big premier institutions to Andhra Pradesh, IITs or AIIMS or IIITs and so on. Similarly, a little zone was carved out, if I know right, for Visakhapatnam. Many other such, as per the Act, which had to be done, has been done in the last 10 years. But now when the focus goes back to talking about Polavaram, the national irrigation project, and also building the capital, we have stated very clearly that yes, we will support, and Polavaram being a national project will certainly help in completing it. By now it should have really been completed, but no, there has been other problems which technically and otherwise also. The state government is seized of it, we are seized of it. So as a national project, we are committed to build it, and we have given the commitment. Ma'am, I want to understand your thoughts on South Indian states in the backdrop of this kind of special support that they definitely deserve. And then we are waiting for next Finance Commission report. And then there will be a delimitation exercise. Looking at all of this, how are you approaching the issues and concerns and priorities of South Indian states? There is an issue and a challenge in that all the 4 plus 1 Puducherry, five plus 1 Puducherry have shown developmental indicators which can be taken on board, and taking them on board and then deciding what will be the tax devolution which will have to be worked out. What are the kind of grants which will have to go? Essentially a job which the Finance Commission has to do. And I also would think all these states will have to negotiate and talk, not negotiate so much, but put across their state's position. They will have to put across how their states have shown developmental indicators over the decades, and because of which they will have to be measured slightly differently. And for furthering the cause of development, they should, if anything, be incentivized in some fashion, or at least not discouraged. So they do have a little challenge in having to take up this issue and convince the Finance Commission, which is a constitutional body, that is also being conscious of the fact that the contribution in those economies are not exclusively by people of that state alone. Today's mobility of labor being what it is, mobility of capital being what it is, states are approaching
both labor and capital issues in such a way that they're drawing the best in the country. So when a state is very proactive, like for instance, I got to understand that Uttar Pradesh is coming up with a policy for global capability centers, the GCCs, so that Noida is developed as one of the biggest GCC center. Now, similarly in Bangalore and Hyderabad, you have a lot of GCCs also in Chennai. States are coming up with some kind of an approach so that they draw capital, bring investors, and then also provide the ecosystem for labor or workers of a higher order also to participate there. And in that, it is not purely that state's own qualified technocrats or semi-skilled workers who get benefit. Mobility being what it is, from all over the country, people are moving to these centers and contributing. So we have to keep that in mind, and therefore see how states which are now probably giving the benefit of mobility to their own young people also attract such investments to their states. And enabling policy and legislative supports will have to be made in those states as well, so that one, they retain their talent pool, two, they get investments so that their talent pool is used within their areas, and also that we spread all the employment generating investments or production centers or service centers to all over the country. I do remember, and may not be a perfect comparison, I do remember in our socialist days, we used to have one big, large, integrated steel mine established in Bokaro. So all over the country, people will have to go to Bokaro for the job. They can be top-notch engineers, or they can be welders or machine, operators or whatever. But today, with the way in which privatization has happened, you have such, if not of that scale, but at least half the scale, all over the country, such investments and production and manufacturing centers. That is how it should be for all states, rather than confine it only to some states. Nobody confines, but if your policy is not attractive enough, people are not going to come. That is the ability which many of the states which are now seeing labor mobility, taking their talent pool outside, will have to do for themselves. बहुत ही कंप्रहेंसिव और बड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपने दिए हैं. तो अगर मैं इसको इस तरीके से कहूं कि सदर्न स्टेट्स must be part of the developmental journey and help other states to grow, but southern states should not have any reason to complain that we are being penalized for being prosperous or developing better. मैं उसको स्लाइटली अलग तरीके से बोलना चाह रही हूँ. साउथ में जिस तरीके से कुछ एरियाज में अच्छा सा प्रोग्रेस हुआ है, उसके कारण उनको आज जो फाइनेंस कमीशन के फॉर्मुलेशन के कारण लगता है कि उनको जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रही है, उनके, और इस समय उनके सरकार जो भी जिस पार्टी का भी क्यों ना हो, वो फाइनेंस कमीशन से ऐसे इफेक्टिवली बात करना चाहिए कि हमें आगे जाने के लिए हमारे अचीवमेंट्स को भी मापदंड से मेजर करिए, और हमारे चैलेंजेस को, क्योंकि हमने इधर अचीव कर दिया, उधर जो चैलेंज रह गए उनको दरकिनारे ना करना, उसका हम मीट करने के लिए जो भी असिस्टेंस देना है वो दे दीजिए. सिमिलरली इधर सिर्फ आबादी के बेसिस में पैसा दे दो और उन स्टेट्स में बोल दो कि आपके आबादी के कारण आपको ये ग्रांट मिल रहा है, उस रास्ते से बेहतर है कि उनका डेवलपमेंटल कमियां को भी आप मापदंड करो, और डेवलपमेंटल मापदंड, डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स को मापदंड उपयोग करने के समय सिर्फ ब्रिजेस है, रोड्स है, वो सिर्फ नहीं है. ह्यूमन डेवलपमेंट का भी इंडेक्स देखना चाहिए, कितने इंस्टीट्यूशंस ऑफ हेल्थ, इंस्टीट्यूशंस ऑफ एजुकेशन उधर है, अगर नहीं है उसको बिल्डअप करने के लिए कितना देना. सो इट्स अ मिरर इमेज सिचुएशन.
जो इधर कर रही हो कमियों के कारण, उधर वो स्ट्रेंथ है उनका। करेक्ट। सो ऐसे देश को हम सबको एक लेवल पर ले आने के लिए जो भी करना है वो करना पड़ेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस टू वॉच है ये, काफ़ी एक्शन होगा इसमें, बिल्कुल। बजट में एक बात और कही गई जिस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, वो है मेट्रोज़ के अलावा दूसरे शहरों के बारे में, 14 सिटीज़ को और डेवलप करने के बारे में, प्लान के बारे में बात की गई। उसमें एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है उस पर अगर आप थोड़ा कुछ जानना चाहें तो। We are looking at using technology and also ways in which town planning has been used. Because of town planning, which has been there for the same format, I suppose, has been there for a long time, many of the indicators are not being fully effectively taken for the advantage of that town. Right. So if you are able to better build taller and keep a lot more open spaces, better manage your natural resources, lakes or water flow, better also plan your town in such a way that natural drainage is maintained, and also look at the way in which the expansion should happen. That's why one other thing which we've given alongside this is to have perishable goods, meaning vegetables and fruits cultivated closer to these kind of agglomerations, so that their consumption demands can be met by growth very close by, rather than bring those perishables from somewhere else. So we are taking a comprehensive look. We are also proposing that, which has not been probably mentioned in the budget, but efforts will be made so that when states come about to manage their waste better, mentioned in the budget is managing the waste, particularly the liquid waste, so that once that is gathered and which is done, the purification is done, at least go fill up the neighborhood in the outskirts, water bodies which are drying up due to extreme weather situations. So we are looking at a comprehensive way in which existing cities also can look up to be a lot more livable, lot more futuristic, without having to constantly go on expanding. Those cities itself can be better re-energized. राइट। एक जो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट मुझे लगता है मैडम, वो है फिस्कल डिसिप्लिन का, फिस्कल प्रूडेंस का। इस पर आपने काफ़ी ऑब्जर्वेशन दिए हैं बजट में भी और अपनी दूसरी बातचीत में भी, लेकिन इसको थोड़ा हम और समझना चाहते थे, क्योंकि सभी स्टेक होल्डर इस बात को बहुत गहराई से देखेंगे कि क्या अब FRBM एक्ट में अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इंटेंट तो क्लियर हो गया, लेकिन पॉलिसी एक्शन में कैसे ये ट्रांसलेट होगा कि हम डेट टू GDP रेशियो के मामले में इसी रास्ते पे चलने वाले हैं। इवेंचुअली फिस्कल डेफिसिट को एक लेवल तक लेके जाने में एक नंबर का आवश्यकता होता ही है, मगर वो ऑब्सेसिवली उसी नंबर के ओर देखते हुए टेम्पररी हर साल टेम्पररी सॉल्यूशन उठाते हुए आप उस नंबर के ओर जाना एक तरीका हो सकता है, मगर मैक्रो इकोनॉमिक दृष्टिकोण से वो अच्छा तरीका नहीं हो सकता। इसीलिए हमने वो NK सिंह का कमिटी का रिपोर्ट से लेकर के एक हेल्दी ऑप्शन फॉर ब्रिंगिंग द फिस्कल डेफिसिट क्लोजर टू द नंबर, सिर्फ नंबर को ना देखते हुए रास्ता को भी देखो कि कैसे उसमें पहुंचोगे। अगर एक ऑब्वियस रास्ता हमारे सामने है तो वो किसी भी कंट्री को आपके ऋण को कम करो, डेट को कम करो, मगर डेट तो आवश्यक है, यू नीड टू बोरो, पर्टिकुलरली ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए बोरोइंग आवश्यक भी होता है, मगर कितना बोरो करोगे, और बोरो करने के बाद वो अमाउंट कहाँ जाएगा? एसेट क्रिएशन के लिए जाएगा, या तो आपके ऑलरेडी स्टॉक ऑफ डेट जो है उसको क्लियर करने में जाएगा। अगर डेट भी कम होना है, मीनिंग द ग्रोथ इन द डेट कम होना है, इसके लिए बोरोइंग का मनी
के द्वारा इस डेट को कम करने के लिए कोशिश करना अच्छा नहीं है, मगर बोरो करो, एसेट क्रिएट करो। सो हाउ डू यू लुक एट योर बोरोइंग, इसके ऊपर विस्तार से बात हुआ। वो कमेटी का रिपोर्ट का भी अध्ययन किए और उसके बाद ही हम इस निर्णय पे पहुंचा कि उस नंबर के ओर ही सिर्फ देखना नहीं है, ये भी रास्ता भी पकड़ो कि डेट को कम करने के लिए विदाउट अफेक्टिंग योर ग्रोथ डिजायर्स एंड एस्पिरेशंस। जी, इनकम टैक्स रेट किधर जाए, क्या डायरेक्शन रहे, इस पे आपने लगातार अच्छे से सिग्नल दिए हैं। लेकिन अब एक चीज़ का और इंतज़ार है कि ये पूरा रिजीम अच्छा हो, उसके लिए आपने कमेटी भी बनाई है। तो उसका क्या मैंडेट, क्या अप्रोच होगा, कैसी कमेटी होगी, कब तक रिपोर्ट आएगी? 6 महीने के अंदर, स्पीच में भी मैं कह चुकी हूँ, 6 महीने के अंदर आना है। डिटेल्स ऑफ द मैंडेट अभी तैयार नहीं है, मगर ब्रॉडली सिंप्लीफिकेशन की ओर और इनकम टैक्स कंप्लायंस और एसएससी का राहत, उससे कंप्लायंस और ड्यू डिलिजेंस का कैसे ले आए। और ऑलरेडी पिछले 3-4 साल से डायरेक्ट टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स के लिए सेकेंड रजीम हमने ले आए, उसमें सिंप्लीफिकेशन, नो एग्जेम्पशन से सब करते हुए उसमें अभी बहुत सारे लोग ओल्ड सिस्टम से इसमें आ रहे हैं। सो वी नीड टू हैव अ कंसिस्टेंट, सिंपल, इजी टू कंप्लाई सिस्टम। वो है लार्जर मैसेज फॉर द कमिटी। स्पेसिफिक्स विल बी डिसाइड अ बिट लेटर। ये एज्यूम करना सेफ होगा कि ये कमेटी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अलावा लॉयर्स, सीएज, स्टेक होल्डर्स भी रहेगी कमेटी में? वो उनसे ज़रूर इनपुट लेंगे, मगर उनमें से एक को कमेटी में बिठा कर लेंगे या उनसे संपर्क करके लेंगे, ये सब अभी डिसाइड करना बाकी है। जी, एक और बड़ा सिग्नल और बड़ी क्लैरिटी आप लोगों ने दी है, वो है कि पब्लिक इंटरप्राइजेस को किस तरीके से देखा जाए। तो 2 लफ्ज़ थे, वो बाहर हो गए हैं अब, डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, बल्कि कॉरपोरेटाइजेशन, जो भी कहें। अब ये है कि नहीं, हम ही इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएं, और फिर देखेंगे कि कब हमको इसको मोनेटाइज करना है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि एसेट मोनेटाइजेशन एक ऐसा काम है जिस पे शायद थोड़ा सा एक्सेलरेशन आएगा। ज़रूर ज़रूर क्या आएगा, करेंगे? और आना भी अच्छा है, क्योंकि अगर आपके एसेट्स वैसे के वैसे पड़ा है और उससे प्रोडक्टिव गेन्स आपको नहीं मिल रही है, आप उसको सेल करने का आवश्यकता नहीं है, हमारी इरादा भी वो नहीं है, मगर उसको अच्छी तरीके से मोनेटाइज करने में देश का भी भलाई हो और वो एसेट काम में आएगा, ना कि उधरी की उधर पड़ा हुआ है, उससे फायदा किसी का नहीं है और धीरे धीरे उसका डिप्रिसिएशन ही ज़्यादा हो रही है, वो होना अच्छा नहीं है। तो इसमें कुछ हम और थोड़ा अंदाज़ लगाना चाहें कि किस तरह के सेक्टर्स में, किस तरह की एक्टिविटीज़ में इसमें कुछ डेवलपमेंट हम देखेंगे। स्ट्रैटेजिक कोर सेक्टर तो हमको पता है कि उसमें सरकार खुद ही बहुत जोर लगाएगी। और ये एसेट मोनेटाइजेशन के लिए पाइपलाइन घोषणा हो चुका है, उन सब में हर एक स्टेट के साथ बात करके उसको आगे ले जाना है, और उसमें इन्वेस्ट करने के लिए जो तैयार है उनको स्टेट्स के साथ संपर्क में ले आना और उनसे बातचीत फैसिलिटेट करना, वो सब हमारे काम होगा। जी, एक चीज़ और, एफडीआई के बारे में बहुत सारी बातें आपने कही हैं और हमको लगता है कि एफडीआई को इनकरेज करने के लिए जो मेजर्स लिए जाएंगे उसमें सर्टेन सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस रहेगा। तो कौन से सेक्टर्स हैं जहां आपको एक्सपेक्टेशन है कि अब एफडीआई आएगा भारत में? ऐसा कोई एक सेक्टर नहीं है जिसको हमने छोड़ दिया इस विषय में। सभी सेक्टर्स को पिछले 10 साल में धीरे धीरे ओपन करना, और जो ओपन ऑलरेडी हो चुका है उसमें एफटीआई का कंपोनेंट को इंक्रीज करना, इसके ऊपर अच्छा सा काम हुआ है। और ग्रेजुअली एक एक सेक्टर को ओपन करके और एक्सपैंड भी करते आ रहे हैं। 21 के बजट के समय पॉलिसी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी के द्वारा जब घोषणा हुई, उस समय से आप देख रहे हैं स्पेस सेक्टर में ओपन हुआ है और उसमें एफडीआई का भी अच्छा अपॉर्चुनिटी हो गया है अभी।
इसीलिए ऐसे कोई सेक्टर नहीं है जिसमें हम एफडीआई रिजेक्ट करें हैं, सबको इनवाइट कर रहे हैं सभी सेक्टर्स में। और इसमें कोई कंट्री की भी चॉइस होगी क्या? आपको पता है ये विषय क्यों हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में इस बात का लॉजिक दिया गया है कि चाइना का इन्वेस्टमेंट भारत में आना चाहिए और ट्रेड इम्बैलेंस जो है उसको दूर होना चाहिए। एकदम सही बात है इन प्रिंसिपल अगर हम देखें तो, लेकिन ये फैसले सिर्फ एक थ्योरी पे नहीं हो सकते। लेकिन इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा है कि चूंकि हम वीज़ा दे रहे हैं वहाँ के लोगों को यहाँ आकर के काम करने के लिए, तो एफडीआई आए, इसमें क्या दिक्कत है? अभी इसके ऊपर कोई सीरियसली मेरे सामने चर्चा नहीं आया है। हाँ, कुछ सरकार के डिपार्टमेंट्स में वीसा देने के लिए डोमेन एक्सपर्ट्स का या टेक्नोक्रेट्स को ले आने के लिए PN3 प्रश्नोत्तरी के विषय को समझ करके वो तो हो रही है, चर्चा हो रही है, मगर डिसीजन कहीं हुआ है नहीं। मुझे तो नहीं लग रहा कि डिसीजन हुआ ये वीसा के विषय में। इन्वेस्टमेंट के विषय में चर्चा मेरे सामने तक नहीं आया है। जी, तो ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे ने एक इंडिकेशन या एक बात कही है, जरूरी नहीं है कि कंसीडर करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुरंत कुछ हो उसमें। नहीं, नॉर्मली इकोनॉमिक सर्वे का नेचर ही सरकार से हटकर उनके अपने राय रखने में, वो डेफिनेटली दे हैव द फ्रीडम, एंड वी डू हैव आर्म्स डिस्टेंस रिलेशनशिप विद इट। एक विषय और है जिस पर कि क्लाइमेट चैलेंज और ग्रीन एनर्जी की तरफ कितने बड़े स्ट्राइड्स हम लें और कैसे कॉम्पिटिटिव हों, क्योंकि उसमें भी चाइना का एक बड़ा भारी डोमिनेंस है। काफ़ी काम उसमें इस बजट में भी इंडिकेट किया गया है। और एक पुरानी बात जो पहले स्लो बर्नर पे थी अब फास्ट बर्नर पे आ गई है, वो है न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। तो उसका थोड़ा अगर आप डिटेल शेयर करना चाहें हमसे। जस्ट इन दैट it's happy news to know that Baba Atomic Research Center has developed this module for modular building of nuclear energy centers. And since it's all indigenously done and they are very sure that they can take it forward, we've taken it on the budget speech as well. That's also because India's commitments in renewable energy, emission control, and investments for renewable energy have all been happening since probably 2015 when Paris Agreement was signed, COP21, I think. And after that onwards, India has been constantly conscious of fulfilling its commitments. The last was in Scotland, where Prime Minister went and spoke about Panchamrit. So we are fulfilling our requirements as committed in renewable energy. But for a country of India's size, renewable energy alone can't give us sufficiency in meeting all the base requirement for energy. Base requirement is something which should be without doubt, without speculation, keep flowing. And in that, renewable energy has a little shortcoming because it won't be available in the night, or till such a time we find storage methodologies for it and so on. So in that sense, nuclear comes of great use, because also now thermal is being discouraged in a very big way. एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी डेवलप हो रही है, वो है क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में, जिसमें इंडिया काफ़ी समय से काम कर रहा था, लेकिन आज तो आपने अनाउंस भी कर दिया बजट में कि उसमें काफ़ी सहूलियत आप देने वाले हैं। थोड़ा उसको अगर आप इलैबोरेट करें हमारे लिए। Wherever the reserves have been found, like today I was happy to know that lithium deposits have been found somewhere in some parts of Karnataka. I don't know how far it is verified. I saw it and subject to verification. So wherever these minerals are, already some parts of Kerala and other states have got some rare earths. So for encouraging the exploration and also extraction of these rare earths, we will be very clearly coming out with a detailed framework with which the country can benefit, because it is the critical minerals which are going to be for future of India very important. We have to have our own supply of it.
अब चर्चा के आखिरी हिस्से में एक दो बातें और मैं आपसे पूछना चाहूँगा मैडम, और वो है इनकम टैक्स और मिडिल क्लास के बारे में। एक जनरल रिफ्रेन, ये फीडबैक अब आपके पास भी आ रहे होंगे कि मिडिल क्लास को थोड़ी सी ज़्यादा उम्मीद थी कि टैक्स में और ज़्यादा छूट मिलेगी। मेरा मानना है कि सरकार ने प्रैग्मेटिक तरीके से इस पर मूव किया है, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन अभी भी है कि उनको थोड़ी और राहत मिले। और उसमें एक जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो गया है इशू, वो है ये रियल एस्टेट में इंडेक्सेशन वाला। एलटीसीजी प्रिंसिपली बिल्कुल सही है कि कोई एक एसेट क्लास कम टैक्स क्यों दे, इसको एट पार लाना चाहिए, लेकिन ये जर्नी है, उसमें इंडेक्सेशन पर कोई रीथिंक? मैं कोई कुछ कमेंट कर नहीं सकती हूँ उसमें, क्योंकि बजट और फिनांस बिल पार्लियामेंट में टेबल हो चुका है, पार्लियामेंट चालू है, सेशन चल रही है। मैं कोई बाहर मीडिया के द्वारा कुछ कहूँ तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को मैं क्रॉस कर रही हूँ। इसीलिए वो पार्लियामेंट का जब तक असेट है और उधर प्रॉपर्टी है, और मैं जाकर कोई भी बोलूं तो पार्लियामेंट में बोलना चाहिए, ना कि बाहर। जी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ और कि सरकार ने इस बार का बजट बहुत अच्छा बनाया है, और सबसे बड़ा चैलेंज जो है एम्प्लॉयमेंट, उसको एड्रेस किया है, और लोगों को इन्फ्लेशन से कैसे बचाया जाए, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, उस पर काम हुआ है। लेकिन पूरी कहानी इस बात पे भी टिकी हुई है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट साइकिल कब से चालू होगा। तो वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसका प्राइवेट सेक्टर वेट कर रहा है? क्या वो सर्कमस्टांसेस अब आ गए हैं? क्या आपको आशा है कि प्राइवेट सेक्टर अब इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेगा? नहीं, मैं मानती हूँ प्राइवेट सेक्टर 2 साल से आगे आ चुके हैं। पिछले 2 साल से इन्वेस्टमेंट्स लगातार हो रही है, और उनका इन्वेस्टमेंट शायद न्यूअर एरियाज में, सनराइज एरियाज में ज़्यादा हो रही है, और बिजनेस का प्रायोरिटी और चेंज इन द वे इन विच इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का मॉड्यूल ही शायद बदल रहे हैं। कंपनी सभी डिजिटाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उपयोग करने के लिए, रोबोटिक्स को उपयोग करने के लिए बड़ा स्तर पर जो कंपनियां हैं वो उसमें बहुत चर्निंग हो रही है। फिर भी इन्वेस्टमेंट चालू हो गया है, और एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी भी हो रही है। इसलिए मैं मानती हूँ अब से शुरू होगा क्या, नहीं, शुरू हो गया है, और अभी तेजी से आगे आएंगे, ये मेरा उम्मीद है। जी, तो आपने जितने भी मेजर्स लिए हैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस वो कौन सी बातें देती हैं कि कंजम्पशन को इससे बूस्ट मिलेगा? इतना काम आपने कर लिया है। मैं ऑनेस्टली बिलीव करती हूँ प्रधानमंत्री जी का ये एम्फेसिस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, पब्लिक फंडिंग ऑफ कैपिटल असेट बिल्डिंग, चाहे उसको कैपेक्स बोलिए, पिछले 4 साल में लगातार उसका पक्का स्ट्रॉन्ग बिग अमाउंट पहले से बोलना, और उसका इम्प्लीमेंटेशन में उस पैसा को सही उपयोग करने में इतना गौर से उसके पीछे पड़ना और मैनेज करना, एग्जीक्यूशन तक फॉलो करना, इसमें से डेफिनेटली रूरल इकोनॉमी में असर पड़ा है, और कंजम्पशन इज डिराइव्ड फ्रॉम दैट। और वो एम्फेसिस अभी भी कमी नहीं हुआ। वोट ऑन अकाउंट के दिन हम जब 11 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट किया, उसको आगे लेके जा रहे हैं अभी। इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द वन बिग assured way in which consumption can increase, and it has increased. That's why we are growing at this number. जी, एक चीज़ और जिसके बारे में, हालांकि जीएसटी का मसला है वो, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर पेट्रोलियम, अब जो हमारी रेवेन्यू बॉयंसी है उसको देखते हुए, कि अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे कम कर दें टैक्स, तो उसका बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये आपको भी लगता है कि समय आ गया है कि इस पर अब कुछ बड़ा मूव होना चाहिए? वो काउंसिल में निर्णय लेके, हमें निर्णय उधर होना है, इशू चर्चा भी उधर ही होना है। जीएसटी कानून में तो प्रावधान ऑलरेडी कर चुके हैं, वो रेट तय करें और सब इकट्ठा निर्णय लें कि हाँ अभी जीएसटी में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, तो इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मगर स्टेट्स उसमें साथ होकर के
जीएसटी काउंसिल में निर्णय लेना पड़ेगा। जी, तो स्टेट्स के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो प्रिपेयर हों बिग पिक्चर देखने के लिए। हमेशा सीकिंग और ग्रीवांस वाला फेज़ अब जा चुका है और पीएम लगातार इस बात पे बहुत ज़ोर देते रहे हैं कि हमारे रिफॉर्म और हमारे ग्रोथ की स्पीड को बढ़ाने के लिए केंद्र, राज्य और लोकल गवर्नमेंट तीनों में जुगलबंदी बहुत ज़रूरी है। तो आपको लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग केस आपके पास है कि आप स्टेट्स को कन्विंस करें कि भाई इस पर पेट्रोलियम पर मान जाओ? बात करना आवश्यक है, बिल्कुल मैं मानती हूँ। जी, आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला निर्मला जी, आपका बहुत धन्यवाद। और आपके इस बजट का बहुत बहुत, मैंने आपको जैसा पहले कहा कि बहुत मुबारकबाद दें कि हमारे लिए क्रिटिसिज्म के लिए, आलोचना के लिए आपने बहुत कम स्पेस छोड़ा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद जी।